topic of this summit is Atmanirbhar Bharat, and we have an highly esteemed speaker, highly knowledgeable speaker, Shri UP Singh, who is Secretary, Ministry of Textiles, Government of India, and personally, if you ask me, he's an inspiration. I follow him on the social media, and I request each of you to actually follow him on social media, and you will understand the kind of range of knowledge, kind of depth of knowledge he has in several subjects, and his love even for culture, poetry, to food, to travel, and everything historical is amazing, and also his strength in technology and science is mind-blowing. And he was earlier the like in the Ministry of Water Resources, and there he did several landmark initiatives which are the impact of which is still being felt, and similar transformational initiatives he's already taking up in Ministry of Textiles. And in the context of becoming Atma Nirbhar, the Ministry of Textiles is like actually taking several steps, and also adoption of digital technologies is getting a lot of impetus under his leadership and guidance. So let me welcome him on the stage, and we will also like after his keynote address, the inaugural keynote address, we will request him to give away the awards of the Atmanirbhar Bharat Summit to our award winners. So and also he is from IIT Kanpur, and he is my senior from there, so it's a special honor to have him here on the stage. Sir, really honored to have you, and I invite you here on the stage to deliver the keynote address, and I will assure you that you will be floored by his address. Welcome. Very good morning to all of you. Thank you for the nice words, but don't believe what he says. You will be very disappointed. And first of all, frankly speaking, I am not prepared at all. I came back from a long tour yesterday night, and then a lot of pending works there in the office. I did attend that, and then frankly speaking, I hadn't even seen the piece of paper. What am I supposed to speak? So I don't know. Everybody talks of Atmanirbhar Bharat. I don't think this concept is that new, even though in recent times we have been speaking more about it and maybe working towards it, but it is not something which I think is a very new concept. When father of the nation, Mahatma Gandhi, he always talked of when the Swadeshi movement, he always talked of Swavlamban actually. He talked of kind of a self-sufficient village, and I have seen that kind of a thing happening long back actually. Maybe in between we kind of did not follow the right path, and then again we have to reinvent the wheel, and today we have started talking again about the Atmanirbhar Bharat. Now I don't know, Atmanirbhar Bharat has earlier speakers must have spoken to you. It has many kind of aspects to it. I would basically confine myself to the experiences which I had in recent past. In fact, I always used to tell a story. I am also a bit of a storyteller. So I always used to tell a story about my childhood. Some people believe that this happened. Some people don't believe this happened. Now the story goes something like this. I came from a very small village in Bihar, a village which didn't have electricity. Very recently now there is electricity, which didn't have road. People didn't have 2 square meals to eat. So we used to go to a school. So those days also when you learn ABC in class 6. These days children start from what they call a UG, or before a kindergarten or whatever, they start speaking ABC. We learned ABC in class 6. So when we were in class 7, 8 and all, the one important topic always used to be write an essay. I don't know whether any longer, of course civil services exam again they have introduced writing an essay, but I don't know whether in 7th, 8th they ask you to write an essay. So Hindi में होता था निबंध लिखो, and English में होता write an essay.
Those days not in so many words. These days everything you have to do it 200 words, 150 words. We used to take pride कि हमने लेख जो है ना 25 पेज का लिखा, किसने कितना एक्स्ट्रा कॉपी लेके लिखा. So that used to be a competition. So you know what used to be the most important topic of writing essay? Cow. You think the cow has become important now? No, cow used to be important then also. तो वही आता था. So what happened that हम लोगों ने पढ़ रखा था पूरा, गाय एक चौपाया जानवर होती है, उसके बच्चे देती है, उसका दूध मीठा होता है, बछड़े बहुत यूजफुल होते हैं. इंग्लिश में भी रट रखा था. काउ इज अ 4-footed एनिमल, सी गिव्स calves, सी इज वेरी यूजफुल, हर काउ इज मिल्क इज वेरी स्वीट एंड ऑल. रटा हुआ था. जाते थे, आ जाता था. टीचर ने कहा कि नहीं भाई आएगा तो वही गाय पे लेख लिखना. वी वेंट देयर. अब वहाँ आ गया, इमरजेंसी का ज़माना था, नाम नहीं लूँगा, आ गया प्रिय नेता सच एंड सच. अब बड़ा मुश्किल हुआ भाई, हम तो रट के गए थे गाय पे. तो हमने इंटेलिजेंट थे, हमने क्या किया कि हमने वो जहाँ जहाँ वो गाय होती थी वो लीडर का नाम लिख के हमने सब लिखना शुरू कर दिया. सच एंड सच वो है. अब you know with what results I got a very poor marks, 0 marks kind of. I went to the teacher. I was a good student, so I said, teacher आपने कहा था गाय पे लेख लिखने को, गाय पे लेख लिखना आया, देखिए क्या हुआ. डोंट वरी, हिंदी में नहीं आया तो क्या हुआ, इंग्लिश में जरूर आएगा, काऊ पे ही ऐसे लिखना. अगेन आई प्रिपेयर्ड. काऊ इज अ 4-footed animal, एंटायर थिंग. आई वेंट देयर. अब वहाँ आ गया फुटबॉल मैच. ना व्हाट डू यू डू? देन आई अप्लाइड माई माइंड. आई सेड कि आई वेंट टू सी अ फुटबॉल मैच. It started raining. Football match did not take place, and on the field a cow was grazing grass. And thereafter, whatever I had learned about the cow, I wrote it actually. So this is often happens when people like Mr. Ravi Gupta, because of my old connections of water resources days, they persuaded me. They virtually lifted me to come here actually. So similarly, as I was prepared for speaking on a cow, so I wrote on cow. So maybe I will speak on something which I am little more comfortable about. So bear with me. You may say that you did not speak on Atmanirbhar Bharat so much, because Atmanirbhar Bharat basically, Atmanirbhar Bharat जब हम खुद आत्मनिर्भर बनेंगे तब तो आत्मनिर्भर भारत बनेगा. He said about water resources. For 4.5 years I was dealing with the issues relating to water. And I love to talk about it. Very recently, I had given, I was made to be a TEDx speaker. I don't think I would have ever qualified to be a TED speaker or a TEDx speaker. But one of my directors of NIFT Bangalore, she herself is a TEDx speaker. Of course, she has studied in JNU and Harvard and all those kind of. We have studied in a village school, and IIT Kanpur doesn't teach you speaking English. It may be teaching you, it will teach you engineering, but not to how to speak English. But when I went there, so I started asking a few questions. For example, I said, everybody will talk, when you talk of water, people will talk, India is a water stressed country. In fact, the first word when someone says, we all say water is elixir of life. Without water, you can't imagine a life anywhere, either in the earth or any planet. लेकिन जब बात होती है पानी, पहला वर्ड आता है वाटर. व्हाट कम्स टू योर माइंड? द फर्स्ट वर्ड परहैप्स would come to either water stress or water scarcity. Then I used to ask people, or I'll ask you also, do you know how much average rainfall takes place in India? Is more than 1,000 millimeter. How can a country which has more than 1,000 millimeter rainfall be a water stressed or water scarce? So when I was also there, I always used to start saying India is a water scarce country, per capita water consumption has gone down from such and such level to such and such level, and all kinds of things. Later on I said, no, India is a water abundant country. But there are countries, forget about the countries, there are places in India which have shown that even 300 and 400 millimeter of rainfall would suffice. I will not get into, because I am not speaking on water, otherwise I would have spoken to you, but at length. All those experiments which has happened and which is doing at a now being done at a much larger scale. So simple. We started a movement where these people also were associated. We started a movement, Catch the Rain campaign. Catch the rain where it falls, when it falls. If you catch the rain where it falls, when it falls, all the problems will be solved. What we have done? We have allowed all our water bodies to disappear. A city like Bangalore used to be known as a city of lakes. Delhi has more than 1,000 water bodies actually. Those water bodies do not exist any longer.
जैसे होता है ना कि आप कहते हैं पैसा, तुम पैसे को पानी की तरह बहा रहे हो. सो एवरी टाइम वी थॉट कि भाई पानी तो बहाने की चीज़ होती है, अब कहाँ बहाओगे भाई, बहाने की जगह भी नहीं रही. इन सिटीज़ development means concreting, you concrete everything. When you make a road, you don't even allow a water to flow to a whatever water body which was existing then. तो मैंने कहा कि आत्मनिर्भरता तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे निर्भर करती है. If we can become a self-sufficient, and for that I always said I was not someone who was a great votary of a big dams and all. अलग बात है कि जब जवाहरलाल नेहरू ने जब पहली बार भाखरा नंगल का भाखरा डैम का वो किया था, तो ही कॉल इट टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. आई सेड ऑल दीज वेल्स एंड ऑल दीज स्मॉल पॉन्ड्स एंड टैंक्स, दे आर ऑल्सो टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. हमने छोटी छोटी चीज़ों को जो हमने नेग्लेक्ट किया, वी ओनली थॉट इन टर्म्स ऑफ अ बिग सोल्यूशंस एक्चुअली. तो मेरा तो अपना मानना है कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल. अगर हमारे गांव आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो हमारा भारत अपने आप आत्मनिर्भर हो जाएगा. उसके बहुत सारे मतलब वो कंसेप्ट है, लोगों को समझ बहुत कम लोग जानते हैं. अभी मैं पानी की बात कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल आई यूज्ड टू आस्क समवन, ऑल ऑफ यू टॉक अबाउट कार्बन फुटप्रिंट्स, हाउ मेनी ऑफ यू टॉक अबाउट वाटर फुटप्रिंट्स. अगर पूछा जाए कि आपने मॉर्निंग में यहाँ पे कप ऑफ कॉफ़ी सर्व हुआ होगा, व्हाट इज द वाटर फुटप्रिंट ऑफ अ कप ऑफ कॉफ़ी? इट इज समथिंग लाइक 140 liters. इट इज नॉट 200 milliliter ऑफ वाटर इन विच यू मेक अ कप ऑफ कॉफ़ी. For that small bit of coffee growing, you require 140 liters of water. We should understand, if I am wearing a cotton shirt, what is the water footprint of this cotton shirt? When I export 1 kg of basmati rice outside, how much water I am exporting? Virtually water I am exporting. So we need to understand things. If we need to understand things, we will find solution to it actually. And it is shown. एक छोटा सा गांव है बांदा में, a village called जखनी. I have visited twice that village. अब उसको जखनी जलग्राम भी कहते हैं. उन्होंने कुछ नहीं किया, नथिंग वेरी ग्रेट. ऑल दे डिड इज, उन्होंने एक प्रिंसिपल लगाया, खेत पे मेर और मेर पे पेड़. हर खेत के चारों तरफ उन्होंने मेर लगा दिया, सो दैट वाटर वॉट एवर फॉल्स डजन गो एज अ रन ऑफ. पानी वहाँ रह गया और उन्होंने मेर पे पेड़ लगा दिए. यू गो टू दैट विलेज, बुंदेलखंड इज नोन फॉर वाटर स्कार्सिटी. जनरली लोगों की जब बात होती है ना, तो लोग बात करेंगे मराठवाड़ा रीजन की बात करेंगे, विदर्भा रीजन की बात करेंगे, बुंदेलखंड की बात करेंगे, मे बी सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, सम पार्ट्स ऑफ गुजरात की बात करेंगे. वहाँ जाइए, आपको वहाँ पे कोई भी आपको कुआं सूखा नहीं मिलेगा, तालाब सूखे नहीं मिलेंगे. लोगों ने कुआं को नेग्लेक्ट किया. व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, अ वेल यूज्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, अच्छी बात है कि टैप से घर में पानी आए, लेकिन वो जो कुआं था, आई रिमेंबर there used to be a collector there. When the day I went there, वहाँ 7,500 गाँव पे महिलाओं ने 5-5 दिए जलाए थे. उस अभियान का नाम ही था कुआं तालाब जियाओ अभियान, कुआं तालाब को जिंदा करने का अभियान. बिकॉज वी फॉरगॉट समवेयर, हमने सबने कहा कि भाई पानी तो भगवान की देन है, लेकिन उसको सहेजना हमारा काम है. इसलिए मैं उस समय लाया था कंसेप्ट ऑफ समथिंग कॉल अ 5R. You know, 3 hours we all reading, writing, arithmetics we used to read in our school days or whatever it may be. Even though I have not understood why 3 hours should be reading, writing starts with W, arithmetic starts with A, but they call it 3 hours. Of course, some of you would be knowing better, so I don't know about that. But we always used to call recycle, reuse and reduce. Reduce the uses of water, recycle water, and reduce, recycle and reuse water. Like treated water, you reuse. But then I brought 2 more R's. I brought an R of what is called recharge. Again, maybe this topic is such a huge topic, so I am just trying to be in disjointed manner in a available 15 minutes time. I am trying to say you a few things. हमारे मंत्री थे शेखावत साहब, अभी भी शेखावत साहब मंत्री हैं जल शक्ति के. Once he was giving a lecture to the members of parliament on this water conservation and related things, और जल शक्ति अभियान और whatever. तो उन्होंने लोगों से पूछा कि बताओ तो which is the largest water reservoir. लोगों ने, किसी ने कहा हीराकुद डैम इन उड़ीसा, किसी ने कहा महात्मा वो राणा प्रताप सागर, someone says हीराकुद, somebody says भाखरा, somebody says something else. And then he says no, it is basically a groundwater aquifers. All the large dams in India store less water than water which is stored beneath this earth in the aquifers. तो रिचार्ज
सिंपल भाषा में मैं लोगों को यही समझाता था कि आप धरती माँ को पानी पिलाओगे तो धरती माँ आपको पानी पिलाएगी. अ वेरी सिंपल कंसेप्ट. भाई रिचार्ज, लेट द वाटर गो इनसाइड इट. अर्बन फ्लडिंग क्यों हो रही है? पानी जाएगा कहाँ? जो बारिश होती है, एक तो ठीक है, देयर इज बीन अ क्लाइमेटिक चेंज. सो पहले 200 मिलीमीटर बारिश होती थी पूरे दिन में, अब 400 मिलीमीटर बारिश हो जाती है 2 घंटे में. आवर सिस्टम्स आर नॉट मेंट फॉर दैट. बट पानी वो जाएगा कहाँ? आपने हर जगह कंक्रीटिंग कर दी, उसके रास्ते ब्लॉक कर दिए, वो वाटर बॉडीज खत्म कर दिए, तो वो पानी जो है वो आपके घर में ही तो जाके घुसेगा, और पानी जाएगा कहाँ? तो रिचार्ज. बट द लास्ट आर व्हिच आई रियली ब्रॉट इन वाज रेस्पेक्ट. We have somehow lost respect for water and that's why all this problem comes. तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई हम कई 1000 किलोमीटर दूर से पानी लाने की ज़रूरत नहीं है. हमारे यहाँ, हमारे छतों पे, हमारे खेतों में, हमारे इतनी बारिश होती है कि अगर हम चाहें तो हम आत्मनिर्भर अपने को कर सकते हैं. एंड सेम इज़ ट्रू फॉर एनीथिंग, चाहे वो आत्मनिर्भर हो, चाहे वो I remember there was a PL 480. I don't know, some of you are older like me, 60 years old, so they would be knowing. हमारे स्कूल में, गांव के स्कूल में पढ़ते थे, दलिया आता था, उस पर लिखा रहता था फ्रॉम USA और वट एवर इट मे बी. दैट वॉज द टाइम when even for a food grains we used to. आज आप पढ़ते यही रहते हैं कि फूड ग्रेन्स जो हैं वो दुकानों में नहीं, स्टोरेज गोडाउन्स, FCI के गोडाउनों में इतने फूड ग्रेन्स हैं कि वो हम उसको ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं. So we have obtained a self-sufficiency in food grains, in most of the food grains actually. So these days it is not only becoming a self-sufficient, it is also what our Honorable Prime Minister keeps saying two things. Of course, earlier he used to always say vocal for local, now he also says local for global. Today we are in a position to not only take care of ourselves, but we can take care of a good part of the population outside. आजकल में जो मैं डील कर रहा हूँ, आई डील विद टेक्सटाइल्स. तो ऐसा है कि भाई रोटी, कपड़ा और मकान आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, हम पढ़ते आए हैं, तो उसमें कपड़ा भी है. पहले हम पानी डील करते थे, आजकल मैं कपड़ा डील करता हूँ. सो वी हैव द कैपेसिटी. आज नहीं, एक ज़माना था जब हम पढ़ा करते थे, हमारे फॉरगेट अबाउट द बिग मिल्स एंड पावर लूम्स, जस्ट थिंक ऑफ हैंडलूम्स, द काइंड ऑफ कारीगरी our people had from the time immemorial. ढाका used to be a part of India. जब लोग बताते थे कि ढाका का मसलिन जो होता था, उसका एक थान कपड़ा एक अंगूठी के अंदर से निकल जाता था, या उसको हम एक माचिस की डिब्बी में बंद कर लेते थे. कारीगरी ख़त्म नहीं हुई है, कारीगरी अभी भी है. एंड वी कुड बी maybe a world leaders. Right now we may not be world leaders, we still produce, we are the second largest producer of टेक्सटाइल्स. इवन दो आप पढ़ते रहते होंगे कि बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया है, बांग्लादेश ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, कई सारी चीज़ों की बात होती है. बट वी हैव, एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट द प्रॉब्लम आर एंड देन लुक एट द सोल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल्स, ओनली 2 things आई विल टेल यू अबाउट टेक्सटाइल्स. एक हमारे यहाँ दिक्कत क्या है टेक्सटाइल्स में कि आवर वैल्यू चेन इज़ वेरी फ्रैगमेंटेड. हमारे स्पिनिंग कहीं और होती है, हमारी वीविंग कहीं और होती है, प्रोसेसिंग कहीं और होती है, गारमेंटिंग कहीं और होती है. We lack size. Even country like Bangladesh have scale and size. You to go to Dhaka, एक जगह पे 2-2, 4-4 किलोमीटर आपको गारमेंटिंग इंडस्ट्री मिलेगी. And that's why Honorable Prime Minister का एक concept आया 5F. When he says you start from a farmer to a fashion, farmer to factory to fashion to foreign. So he has basically, sometimes back it was approved what is called a PM Mitra scheme, whereby we are going to set up what is called a mega textile parks over an area of more than 1,000 acres with all modern infrastructure with plug and play facility. So that will bring scale, that will bring size, that will reduce substantially the logistics cost. The other things we have started also, which is not only for our scheme, but which is for other ministries also called PLI. आप लोग पढ़ते रहते हैं कि there is something called a production linked incentive scheme. And under the PLI scheme, what we are concentrating is on what is called a man-made fiber and technical textile. अब पता नहीं आप लोगों में से जिन लोगों ने टेक्सटाइल के बारे में नहीं जाना होगा, आई डू नॉट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज अ मैन-मेड फाइबर एंड व्हाट इज अ टेक्निकल टेक्सटाइल. वी नो जनरली नेचुरल फाइबर. इंडिया इज बेसिकली इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन, एंड कॉटन इज आवर मेन नेचुरल फाइबर. कॉटन हुआ, सिल्क है, जूट है, ऊल है, दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. बट इज समथिंग कॉल्ड मैन-मेड फाइबर. इन इंडिया वी हैव 2/3 राइट नाउ natural fiber, only 1/3 man-made fiber. You go to the world,
It's about other way around. 2/3 is man-made fiber, only 1/3 is a natural fiber. So if we want to be basically a global champion also, not only Atmanirbhar, global champion, then we need to have a much larger share as far as the man-made fiber is concerned. वहाँ भी हमारा strength है. Man-made fiber कहाँ से बनता है? I do not know how many people sitting here know कि ये जो प्राइमरली तो जो मैनमेड फाइबर की हम बात करते हैं तो पॉलिस्टर की बात करते हैं, नायलॉन की बात करते हैं, ये कहाँ से आता है? ये बेसिकली रिफाइनरी से आता है. एंड वी हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइनिंग कैपेसिटी इन इंडिया. ये जो रिफाइनरी से केवल हम समझते हैं कि पेट्रोल, डीजल या किरोसिन या एविएशन टरबाइन फ्यूल बनता है, उससे जो नाफ्ता बनता है, पैराजाइलिन बनता है, उससे पीटीएमईजी बनता है. दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स एज फार एज द मैनमेड फाइबर इज कंसर्न. So we have brought this PLI scheme for man-made fiber and technical textile. When we talk of technical textile, functional textile की ज़्यादा बात नहीं होती है. पूछा जाए भाई टेक्निकल टेक्सटाइल क्या है, बड़ा मुश्किल है डिफाइन करना, बट हम सिंपल बात कर रहे हैं. मैं लेके आया था अभी मास्क लगाना लोगों ने बंद कर दिया है. ऑल दिस N95 मास्क विच यूज इज अ बेसिकली एग्जाम्पल ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल. जब इंडिया में पैंडेमिक्स आया तो हुआ कि पीपी किट कहाँ से आएगा. शुरू में इतनी दिक्कतें हुई. आवर मिनिस्ट्री एंड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री रोज, एंड देन वी नॉट ओनली प्रोवाइडेड एनफ पीपी किट फॉर यूज इन इंडिया, वी ऑल्सो एक्सपोर्टेड अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ पीपी किट. तो टेक्निकल टेक्सटाइल इज वन एरिया जिसके एप्लीकेशंस इतने ज़्यादा हैं, राइट फ्रॉम अ रोड कंस्ट्रक्शन टू अ लाइनिंग ऑफ अ कैनाल टू अ फ्लड प्रोटेक्शन टू मेनी थिंग्स. तो यू हैव जियो टेक्सटाइल, यू हैव डिफेंस टेक्सटाइल. ये जितने हाई अल्टीट्यूड क्लोथ्स होते हैं या जितने बुलेट प्रूफ जैकेट्स होते हैं, कार में इवन योर एयर बैग और वॉट एवर यूज, दी ऑल आर टेक्निकल टेक्सटाइल्स एक्चुअली. So we have started something called a PLI scheme for man-made fiber and technical textile. These two schemes not only make us right now, for example, technical textile, we are almost 2 billion worth of technical textile we are importing. I think in a few years time we would not only be stop that importing, but we would be able to export almost 8 to 10 billions of USD worth of technical textile. I just gave these two examples relating to textile ministry. So similarly, of course, every ministry, I don't know whether someone came from a DPIIT, which is a nodal ministry as far as the Atmanirbhar Bharat is concerned, whether someone has come or someone will come and talk to you. Right from whatever, there are a lot of initiatives which has been taken actually, not only to make Atmanirbhar Bharat, but now we are going one stage ahead. Apart from being self-sufficient, we would certainly be one of the largest player, and we are getting opportunity now. World is looking to us. For example, in textile today, there is something called a China plus one strategy. People are looking us. We have the advantage of sustainability. We have a lot of other advantages. So a lot of US and West basically wants to source things from India and not to go to China. So it's a very great time, I would say, as far as the India is concerned, not only to be a real becoming from not only a vocal for local, but really going what is called a local to global. So I'm sure the initiative which the government of India has taken, the initiative which state governments has taken, the initiative which industry, the private players have taken, all that put together perhaps really make India not only a Atmanirbhar, but would become a kind of a great player as far as the world is concerned. Thank you very much. I know I was not prepared for this speech, so I spoke something about my previous experience, something about this experience in a very disjointed manner. So excuse me for that. And next time when I am asked to come here, I'll come little better prepared. Thank you very much.